हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड एआईबी के व्यू पॉइंट से मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। पीआईएल, सबसे पहले पीआईएल स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट इज राइट इन रैम कंडक्टेड फॉर द पब्लिक एट लार्ज। तो यहाँ पे कोई प्राइवेट पर्पस के लिए आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते, वो पब्लिक पर्पस के लिए ही आपको अलाउ किया जाएगा। PIL can be filed by any person with the interest of public at large. It cannot be filed for personal interest. तो देखो, नाम ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पब्लिक पर्पस के लिए उसको अलाउ किया जाएगा, प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं। पीआईएल कहाँ पे फाइल किया जाता है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर। हाई कोर्ट में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आप पीएल कर फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए फाइल कर सकते हैं। केसेस दैट कैनॉट बी एंटरटेन्ड अंडर पीआईएल: landlord tenant matter, service matter relating to pension and gratuity, admission to medical and other related services, petition for early hearing cases in high court and subordinate court. इन सभी में आप देखिएगा राइट इन पर्सनम है, पर्सनल राइट से रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने पीआईएल किया हुआ है, इसलिए इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। जहाँ पे पब्लिक डोमेन या पब्लिक से रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर इश्यू है, उसको ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। फर्स्ट केस ऑफ पीएल इन इंडिया वाज हुसैनर खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द ईयर 1979। PIL, any person who is not an aggrieved party can also file PIL। तो PIL देखो, अगर आप अफेक्टेड पार्टी नहीं है तो भी PIL फाइल कर सकते। ये बताया गया था इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्स बाय जे भगवती। Justice P.N. Bhagwati was the first Chief Justice of India when the concept of public interest litigation was introduced to the Indian judicial system in 1986। PIL हमने कहाँ से लिया हुआ है? PIL was originated in USA, जिससे हमने PIL का कॉन्सेप्ट बोरो किया हुआ है। Landmark judgments: the seeds of the concept of public interest litigation were initially sown in India by Justice Krishna Iyer in 1976 in Mumbai, Kamagar Sabha versus Abdul Thai। The first reported case of PL जो मैंने अभी डिस्कस किया हुआ था was Hussainara Khatoon versus State of Bihar in 1979, that focused on the inhuman condition of prisoners and under trial prisoners that led to the release of more than 40,000 under trial prisoners under right to speedy justice emerged as a basic fundamental right। Justice P.N. Bhagwati in the case of S.P. Gupta versus Union of India. In this case, it was held that any member of the public or social action group acting bona fide can invoke the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 or the Supreme Court under Article 32, seeking redressal against violation of legal or constitutional rights of persons who, due to social or economic or any other disability, cannot approach the court। तो पीएन भगवती ने ये पर्टिकुलर जजमेंट में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि भले ही आप अफेक्टेड पार्टी नहीं है, यू आर नॉट द अफेक्टेड पार्टी, बट स्टिल यू कैन फाइल एन पीएल ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। Other related judgments related to PIL: MC Mehta versus Union of India 1986 addressed environmental pollution and the protection of Taj Mahal. Vishakha versus State of Rajasthan 1997 dealt with sexual harassment at the workplace, leading to the formulation of guidelines. Vishnu H versus State of Karnataka 2007 tackled issues of governmental inefficiency and corruption in local administration. Right to Food case 2001 concerned with the right to food and forced the government to distribute food grains to the poor. Who can file an PIL and against whom? An individual or organization can file a public case by filing a petition, even if they are not directly impacted by the issue। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ भी पीआईएल फाइल कर सकता है।
कहाँ पे किया जा सकता है? आर्टिकल 32 हाई सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में, एंड अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. A public interest litigation can be filed against a state or central government, municipal authorities, and not any private party. The definition of a state is the same as given under Article 12 of the Indian Constitution, and this includes the governmental and Parliament of India, and the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. तो जो भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल होता है अंडर आर्टिकल 12, उसके अगेंस्ट आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं. द फ्रिवलेस पीआईएल्स विथ वेस्टेड इंटरेस्ट मस्ट बी डिस्करेज टू कीप इट्स वर्कलोड मैनेजेबल. Scope: PL can address a range of issues including environmental concern, fundamental rights violation, rights of marginalized communities, welfare issues such as healthcare, education and housing, accountability of government action, judicial activism. PL allows the judiciary to take proactive measures in instances where other branches of government are not acting in the public best interest. Form of petition: the petition can be filed as a letter or a formal document, especially in the case of underprivileged groups who may not have access to legal resources. तो पीएल एक फॉर्मल पेपर में या फिर लेटर के फॉर्म में भी फाइल किया जा सकता है. थैंक यू. तो ये शॉर्ट डेफिनेशंस एंड बेसिक नोट्स थे रिगार्डिंग पीआईएल फॉर एआईबी एग्जाम. आप इसको नोट कीजिए और एग्जाम में ये इतने पॉइंट्स को एटलीस्ट पढ़ के जाइएगा. क्या क्या पॉइंट्स है मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं. तो पीआईएल का फुल फॉर्म, पीआईएल कहाँ पे फाइल किया जा सकता है, पीआईएल जो है सबसे पहला केस कौन सा इंडिया में आया हुआ था, who was the first chief justice of India when PIL was introduced, और उसके बाद जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है रिलेटिंग टू पीआईएल उसको आप याद कर लीजिएगा. ये भी याद रखिएगा कि पीआईएल कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, भले ही वो अफेक्टेड पार्टी नहीं है, वो भी पीआईएल यहाँ पे फाइल कर सकता है. थैंक यू.